number one is objectives. So this is the hierarchy of plans we have drawn. That is, first is objective, second one is strategy, third is policies, and number four is procedure, number five rules, number six program, seven methods, eight budgets. So this is called the hierarchy of plans. We will discuss one by one. So number one is objectives. So objectives, as we know, the aim or the purpose which the company or the organization wants to achieve, seeks to achieve. So that is called as objectives. ठीक है? Goal. Goal is somehow different from objectives. Aim बोल सकते हैं और purpose बोल सकते हैं, जो कि कंपनी अचीव करना चाहती है. All the activities of an organization is generally directed towards the objectives. Objectives fix हो जाने के बाद सारे जो work होते हैं, all the activities are directed towards that objective, उसको achieve करने के लिए. Okay? Next, it should be flexible. Objectives flexible होना चाहिए. जो भी हम लोग changes उसमें चाहें, we can make the changes in that. एंड इट मस्ट बी टाइम बाउंड. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग जैसे एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, जैसे मंथली टारगेट दिया जाता है, वीकली टारगेट दिया जाता है, डेली टारगेट दिया जाता है, सो लाइक दैट. सो इट मस्ट बी टाइम बाउंड. नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन. एक बार हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्टिव, एक एम आ जाता है, दैट मोटिवेट अस टू अचीव दैट इन टाइम एज इट इज टाइम बाउंड. एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल. अगर हम लोगों का कहीं पे कुछ भी डेफिशिएंसीज, कुछ डिफरेंस आ जाता है, देन दैट कैन ऑल्सो बी चेक्ड. ओके, ऑब्जेक्टिव अगर फिक्स्ड है, देन विद इन द टाइम इफ वी आर अनेबल टू अचीव, तो उसको भी चेक किया जा सकता है. सो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर कंट्रोल. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी. So what is strategy? Strategy is just the blueprint of an organization's desired destination and direction and image. कंपनी का destination क्या है? Okay, what is the desired and in which direction that is being moved and the image. So this is overally called as strategy. So strategy is the blueprint of all this. So it is action oriented. Strategy is always action oriented and more specific than objectives. Objectives से ज़्यादा specific होता है strategy, and it is based on organizational objective. Objective पे base करता है हम लोगों का strategy. Okay? So that's why it is in the second of the hierarchy, and it is flexible and dynamic. Dynamic means which keeps on changing, as we know. So flexibility is there both in the case of objective also. Objective में भी ये point common point है. It is flexible as well as strategy is also flexible, but strategy is made on the basis of objective.